फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो सिलेबस दी जाती है किसी भी टेस्ट के लिए, उसमें पाकिस्तान अफेयर को भी इंक्लूड की जाती है, जिसमें 15 टू 20 MCQs आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के हम अपने जो है वीडियो सीरीज़ में, लेक्चर सीरीज़ में हम आपको पाकिस्तान अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपसे डिस्कस करेंगे, पूरा लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपकी पाकिस्तान अफेयर का जो पार्ट है, जो हिस्सा है सिलेबस में इंक्लूड है, वो इम्प्रूव हो सके, वो क्लियर हो सके और आपको एग्ज़ाम में कोई मसला दरपेश ना हो सके। तो इसके लिए आज से ही हमने स्टार्ट किया है। हम इसके रिलेटेड बहुत सारे MCQs के वीडियोज़ बनाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट MCQs आपसे डिस्कस करेंगे, जो पास पेपर में आ चुके हैं और मोस्ट एक्सपेक्ट की जाती है कि इन फ्यूचर के पेपर्स में भी आ जाए। ठीक है, तो आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो है आपको ये वाले जो MCQs होंगे ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे इंशाल्लाह। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। Who was the first president of the Constitution Assembly of Pakistan? Answer: Qaid-e-Azam. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गोट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर: 9 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? आंसर: ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? आंसर: 12 मार्च 1949। और ये पेश किया था, प्रेजेंट किया था बाय लियाकत अली खान, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली? आंसर: 7 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? आंसर: प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? आंसर: कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स? 23 मार्च 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर: चौधरी मोहम्मद अली। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1955 कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर: इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट एज वाज प्रेस्क्राइब फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर: 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, व्हाट टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर: ही मस्ट बी अ मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर: उर्दू एंड बंगाली, बोथ लैंग्वेजेस were declared official language. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु abrogated 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर: इस्कंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज abrogated and martial law was proclaimed? आंसर: अक्टूबर 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान? 8 जून 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
Which kind of system of government was introduced by 1962 Constitution? आंसर है प्रेसिडेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है When the Constitution of 1962 was abrogated? Answer 20 March 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकम CMLA चीफ मार्शल सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? आंसर याहिया खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो लॉन्च्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री? आंसर 14 अगस्त 1973। Next question, which kind of system of government was introduced in 1973 Constitution? Answer parliamentary। Next question हमारे पास है who elect the president according to 1973 Constitution? Answer National Assembly and Senate, both houses are selecting the president। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु एलेक्ट प्राइम मिनिस्टर? आंसर नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर द पर्सन टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन टू नेशनल असेंबली? आंसर 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट इन सेनेट वाज सेट? आंसर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? आंसर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्टिकल 52B आर्टिकल 58 2B of Constitution 1973 is about power of president to dissolve National Assembly। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी आर्टिकल वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? आंसर 234। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर 250 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल वर देयर इन 19 Constitution? 280 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वर डिक्लेयर नॉन मुस्लिम? आंसर कादियानीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड फातिमा जना जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? आंसर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय? आंसर अमीरुद्दीन खिदवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय? आंसर प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड इन 3rd January 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान? आंसर झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज रिवर ऑफ सिंध। आज के लिए इतना ही। इससे आगे के हम जो है नेक्स्ट वीडियो में MCQs कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप जो है हमारे चैनल को वॉच करते रहना। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।